Hello students, we are going to discuss quick solutions of All India Akash Test Series JEE Advanced 2019, and we will start our discussion with section 1. Section 1 contains single correct type questions. Question number 21 says, assuming all orbitals in a given subshell have equivalent energy, in which type of orbital would highest energy electron of Ti plus 4 be found? The neutral titanium has atomic number 22. Atomic number never change whether the element is neutral or charged, क्योंकि atomic number depends on number of protons और charged particles में ions में number of electrons change होते हैं, ना कि number of protons. So first of all, write the electronic configuration of titanium. Titanium का atomic number है 22. So it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. This is the electronic configuration of neutral titanium atom. और टाइटेनियम प्लस 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s और 3d से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अब उन्होंने बोला है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन. हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल. और p ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है? इट इज dumbbell shape. So these two are the shape of p orbitals. First shape है वो s orbital की है, fourth shape is of d orbital, and fifth is of dz square. Answer would be option C, either 2 or 3. Question number 22. A medicine used to treat acne contain chemical compound X. The molecular mass of chemical compound X is 248.3 gram per mole. 1 gram of compound X was analyzed and found to contain 580.6 milligram carbon, 129 milligram sulfur, 112.8 milligram nitrogen, and 48.8 milligram of hydrogen, and rest is oxygen. Molecular formula of compound X is. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं कंपाउंड एक्स का, एंड कंपेयरिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, सल्फर, nitrogen, hydrogen and oxygen. These 5 elements are present in compound X. अगर 1 ग्राम में 580.6 मिलीग्राम प्रेजेंट है तो 100 ग्राम कंपाउंड X में, so the percentage would be 58.06, 12.9 सल्फर की हो जाएगी परसेंटेज, नाइट्रोजन 11.28, hydrogen 4.88, and remaining is oxygen, that is 12.88. अब atomic mass, we know कार्बन का atomic mass होता है 12, सल्फर का 32, नाइट्रोजन 14, hydrogen 1 and oxygen 16. Using these data we can calculate number of moles of these elements present. It would be 58.06 divided by 12, 4.84. Sulfur का 12.9 divided by 32, that is 0.403. 11.28 divided by 14 would come out to be 0.805. Hydrogen is 4.88. And for oxygen it would be 0.805. अब
अगर हम इनमें सिंपलेस्ट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशो कार्बन आएगा 12, सल्फर 1, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12 and oxygen 2. So empirical formula of compound X is C12, H12, O2, N2S. And if you calculate the empirical formula mass, it would come out to be 248. और empirical formula mass और molecular mass are equal. मतलब empirical formula and molecular formula are also same. So answer is option A. Question number 23. Which is correct balanced form of chemical equation depicted in figure given below? Element P is shown by hollow sphere. और अगर आप देखते हो तो hollow sphere यहाँ पे single present है. मतलब element P is monoatomic and there are 4 P elements present. And secondly, if you look that element Q is depicted by filled circles और element Q exist in diatomic form और diatomic form में भी 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो Q के यूज हो रहे हैं. So 4P plus 3Q2 it forms 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं of P2Q3. So this is the correct balanced equation and it is given only in option B. So answer for question number 23 is option B. Question number 24. Which of the following has longest NO bond? Bond length depends on bond order. Bond length is inversely proportional to bond order. So to compare the bond length, हमें सबसे पहले bond order देखना पड़ेगा कि इन molecules में कितना है. NO molecule has bond order 2.5 according to MOT. NO positive का होता है 3. और अगर हम NO2 and NO2 पॉजिटिव की बात करते हैं, this is the structure of NO2. And this is the structure of NO2 positive. If you look at these structures, the bond order of NO bond in NO2 is 1.5. NO2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर है 2. सो जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा एंड मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ NO2 and minimum bond order is of NO2. So answer is option C. Next, question number 25. Species having triangular planar geometry is. Let us draw the geometry of all these species one by one. First is ClF3. ClF3 has 3 bond with fluorine and 2 lone pair on central atom. So इसकी शेप होगी T शेप. Next NCl3. NCl3 में सराउंडिंग एटम 3 प्रेजेंट है और सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर है. सो इट्स शेप इज ट्रायंगुलर पिरामिडल. नेक्स्ट इज CO3 2 minus carbonate ion. This is the geometry of CO3 trigonal planar. Or triangular planar. Last is I3 negative. I3 negative में
सेंट्रल एटम के 2 सराउंडिंग एटम्स हैं और 3 लोन पेयर हैं. And its geometry is linear. So the only triangular planar geometry is in option C. Answer is option C.